Good morning to everyone. Today we are starting with the new chapter, that is accounting for limited liability partnership. Now, when you hear this title, what do you come to know? Because all of you have learned partnership accounts in your 11th standard, and especially and then in depth in your 12th standard. So you all know that the liability of the partners are unlimited. That means unlimited liability means that their dues, their liability is not only restricted to the business assets, but if they are not able to pay the creditors of the business, their personal property also will have to be used to repay those liabilities. That is the meaning of unlimited liability. Means that liability is not limited to the extent of their share in the partnership. Even their personal property can be used in case to repay the creditors of the business. So what is the special word here? Because we are talking about a special kind of partnership which is limited in which has a limited liability partnership. So limited liability partnership businesses are uh, they are recognized worldwide, they are popular worldwide. But this special kind of business organizations have been introduced in our country by the way of limited liability partnership act 2018. As we all know, partnership is governed by Partnership Act 1932. Same way, Limited Liability Partnership is governed by Limited Liability Partnership Act 2018, which came into effect from 31st March 2019. So these are like, this can come in the objective that Limited Liability Partnership Act, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो कौन से एक्ट से गवर्न, उसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है, देन you will have to write Limited Liability Partnership Act 2008. This is the act which governs the limited liability partnership. And now, what is limited liability partnership? It is a combination. It combines the advantages of both the company and partnership into a single form of organization. मतलब यहाँ पे आपको दो चीजों का बेनिफिट मिलता है, पार्टनरशिप और कंपनी. इट इज लाइक अ combination of the advantages of both the company and partnership into a single form of organization, that is limited liability partnership. Here as the इन LLP क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को हम LLP बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. वन पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस. मतलब एक पार्टनर की गलती के वजह से या मिसकंडक्ट मीन्स फ्रॉड का दूसरे पार्टनर को उसका सजा नहीं मिलना चाहिए. सो दैट इज वन बेनिफिट व्हाट यू गेट इन द लिमिटेड liability partnership. In the limited liability partnership, all partners have a form of limited liability for each individual's protection within the partnership, similar to that of a shareholder of a company. तो जैसे शेयर होल्डर को लिमिटेड लाइबिलिटी का एडवांटेज मिलता है, वैसे ही एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी में जितने पार्टनर्स होते हैं उनको भी ये लिमिटेड लाइबिलिटी, एज द नेम इटसेल्फ सेज, दिस इज अ पार्टनरशिप which has limited liability.
सो उनको ये बेनिफिट मिलता है, सेम लाइक द शेयर होल्डर्स एंजॉय लिमिट द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इन द कंपनी, सेम benefit is obtained by the partners in limited liability partnership. In LLP, see, however, unlike shareholders, the partners have the right to manage business directly. मतलब shareholder तो they are the members of the company, but they see they don't govern, they don't manage, they don't have a right to manage the business directly. वो लोग क्या करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, who what they do, they look after the business. But here the partners in the limited liability partnership, they have this right to manage the business directly. They manage the business directly, and LLP also limits the personal liability of the partner for the errors, omissions, incompetence or negligence of the LLP's employees or other agents. While LLP has a separate legal entity, is liable to the full extent of the assets, the liabilities of the partner would be limited to their agreed contribution in the LLP. उनका क्या है, what is there here, they have their liability is limited to their agreed, जितना उनका contribution है LLP में उतना ही उनका liability है, and जो उनको like जो भी they will not be, their liability is limited, मतलब किसी और का गलती का they will not have to compensate for that. And what is the act, which is, see, LLP is governed by the LLP agreement. So the limited liability partnership is managed as per the LLP agreement, but in case there is absence of such agreement, the LLP would be governed by the framework provided in Schedule 1 of the Limited Liability Partnership Act 2008. मतलब नॉर्मली LLP किससे गवर्न होता है, इट इज गवर्नड बाय द LLP एग्रीमेंट. बट इन केस LLP एग्रीमेंट नहीं बना, in case there is no LLP agreement, so what they will do, it will be the LLP will be governed by the framework rules and regulations provided in Schedule 1 of the Limited Liability Partnership Act 2008. So ये LLP Partnership Act 2008 में क्या है, ये शेड्यूल 1 में क्या है. शेड्यूल 1 डिस्क्राइब्स द मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल राइट्स and duties of partners of the LLP and of the limited liability partnership and its partners. तो शेड्यूल 1 क्या डिस्क्राइब, उसमें क्या है, मैटर्स रिलेटिंग टू द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP and the limited liability partnership and its partners. So ये सब it is there in the schedule 1 of the Limited Liability Partnership Act 2018. तो ये भी this can also be asked as a multiple choice question कि LLP कौन से एक्ट से गवर्न होता है, तो हम लोग बोलेंगे LLP गवर्न होता है by LLP agreement. What if there is absence of LLP agreement? Then Schedule 1 of the Limited Liability Partnership Act 2008 shall be followed. Schedule 1 of the LLP Partnership Act 2008 in case there is absence of LLP agreement. So this you may
have this all you have to understand, because we know now for sure that what is the pattern for this semester 6 examination for April or May 2020 2000 this 2021 में जो हमारा semester 6 exam है उस that has which will be conducted by on behalf of Mumbai University, colleges have to conduct. And क्या बोला है, क्या इस बार what will be the pattern? It will be MCQ questions. 50 questions will be there for 1 marks each, and compulsorily you will have to solve all the 50 questions for 1 marks each. 50 questions, 1 marks each, which will be later converted into 100 marks, and your result what you will be getting will be of 100 marks. So now let us go to the next slide. So now we will see the advantages of LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का क्या एडवांटेजेस है कि सबसे पहले दिस वन LLP इज अ वेल नोन एंड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ बिजनेस वर्ल्ड वाइड इन कंपैरिजन टू अ कंपनी. तो जैसे हम कंपनी को तो सब जगह रिकॉग्नाइज वेल नोन है, एक्सेप्टेड है ही. कंपनी जो है public limited company, it is a very well known and accepted form of business. Similarly, even LLP, limited liability partnership, also is a well known and accepted form of business worldwide. इसे एक्सेप्ट करते हैं और ये वेल नोन बिजनेस है. इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ LLP. Next, what we can say is it has low cost of formation. इसको फॉर्म करना उतना कॉस्ट नहीं लगता जितना कंपेयर टू अ कंपनी. So it is a combination of both company and partnership, combination of both company and partnership. And unlike company which involves a high cost of formation, it is not the case with the LLP. LLP has a incurs low cost of formation. Next point, and it is easy to establish a LLP. It is easy to establish. Cost भी low cost लगता है as compared to a company, and no minimum capital contribution. तो ऐसा कुछ है नहीं कि द कंट्रीब्यूशन ऑल्सो ऐसे मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है. एंड इट इज इजी टू मैनेज एंड रन. No minimum capital contribution, and it is easy to manage and run, and there is no restriction to as to maximum number of partners. अब देखो पार्टनरशिप बिजनेस में बैंकिंग नॉन बैंकिंग 10-20 मैक्सिमम लिमिट है. फॉर द पार्टनरशिप देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट इन पार्टनरशिप बिजनेस. Correct? Banking 10, non-banking 20. If I am not wrong, there is a maximum number of partners restriction in partnership business. But when you talk about LLP, it do not have any maximum limit of partners. तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना भी पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हो इन द LLP बिजनेस. जैसे हमें पता है LLP में मिनिमम यू रिक्वायर 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम पार्टनर्स का कोई लिमिट नहीं है. This is because whenever you talk about a partner, single person cannot be referred as a partner. Partner मतलब minimum 2 पर्सन तो चाहिए. सो द कितना पार्टनर्स होना चाहिए? what is the numbers? The numbers are here, 1 minute.
नंबर्स आर कि 2 हमें चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. So no restriction as to maximum number of partners. जो अगर प्राइवेट कंपनी में भी there is a limit for maximum number of members which is 200 and minimum is 2, but for LLP there is no limit in the maximum number of partners. Then LLP and its partners are distinct from each other. तो LLP जैसे पार्टनरशिप बिजनेस एंड पार्टनर्स आर वन एंड द सेम. उनको अगर उनका बिजनेस प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनको यूज करना पड़ेगा. बट ऐसा LLP में नहीं है. LLP एंड इट्स पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम each other. Partners are not liable for the act of others. दूसरों के एक्ट के लिए दे आर नॉट लाइबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड. सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट, पार्टनर ये एक चीज है, पार्टनर्स आर नॉट लाइबल, partners are not liable to the act of other partners. फिर एक चीज जैसे मैंने बोला, no exposure to personal assets of the partners except in case of fraud. No exposure to personal assets of the partners except fraud. मतलब फ्रॉड को छोड़ के, पर मैंने क्या बोला, पार्टनर्स का पर्सनल असेट यूज नहीं होता, लेकिन इफ पता चले दैट देयर इज अ फ्रॉड तो वो सिचुएशन में वो पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकता है इफ देयर इज अ कंडक्ट ऑफ फ्रॉड बाय अ स्पेसिफिक पार्टनर. यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियरेंस कम है, लेस रिक्वायरमेंट एज टू मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स. जो स्टैट्यूटरी कंपल्सरीली जो चीजें चाहिए दैट इज लेस एज मेन, जो हमें मेंटेन करना पड़ता है स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, वो रिक्वायरमेंट भी कम है एज कंपेयर टू कंपनीज. इजी टू डिसॉल्व और वाइंड अप, इसको वाइंड अप करना भी इजी है. और ऑडिट रिक्वायरमेंट जो है is only in case of contributions exceeding 25 lakhs or turnover exceeding 40 lakhs. Very important. मतलब ऑडिट का रिक्वायरमेंट कभी कंपलसरी है ओनली इन केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सीडिंग 25 lakhs and sales or turnover exceeding 40 lakhs. So this is again a very important point which you all have to understand in case of a, in case ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि when there is a requirement for audit, audit requirement कभी है, audit requirement is compulsory when there is a in case of contributions exceeding 25 lakhs or turnover exceeding 40 lakhs. ये लिख के लेना that contribution exceeding 25 lakhs and turnover exceeding 40 lakhs. So now after this, after audit requirements, we will come to disadvantages. Now we will come to disadvantages. इसका disadvantage क्या है कि in under some cases जो liability में extend to personal asset of partners. मतलब क्या है, कौन सा केसेस में फ्रॉड अगर होता है तो जो पर्सनल असेट है पार्टनर्स का वो भी यूज हो सकता है. और एलएलपी का एक और डिसएडवांटेज है कि वो पब्लिक से पैसा कंट्रीब्यूट रेज नहीं कर सकता लाइक द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. जो एलएलपी है इट कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक. This is one of the disadvantages of LLP, that it cannot raise money from the public.
Now let us come to the partners. Let us come to understand that what are the requirements for a partner in LLP. LLP में partner का क्या requirement है? Let us see that here. पार्टनर्स के बारे में लेट अस स्टडी हियर इन LLP. सबसे पहले लेट अस सी द मीनिंग. So under limited liability partnership, now I will explain you about the partners. तो यहाँ पे partners का क्या requirement है under limited liability partnership? So partners कौन हो सकते हैं? They may be a natural or artificial. So partners are persons. अब पर्सन्स बोलते हैं तो इसमें दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, आर्टिफिशियल दैट इज कंपनी भी एंड देन अवर नेचुरल, दोनों रियल दैट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल and natural person that is human being, artificial person that is companies, both are included, both can be the partners in the LLP. तो LLP में पर्सन पार्टनर्स कौन हो सकता है? आर पर्सन्स. नाउ दे मे बी नेचुरल ऑल्सो एंड आर्टिफिशियल ऑल्सो who have subscribed who have subscribed their name in the incorporation, who have subscribed their name to the incorporation document. रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट. एनी न्यू, अभी किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करना रहेगा तो एनी न्यू पर्सन कैन बी एडमिटेड टू द LLP as per the provisions of LLP एग्रीमेंट. मतलब LLP एग्रीमेंट में एवरी देयर प्रोविजंस इज देयर कि नया पर्सन को हम एडमिट कर सकते हैं टू द LLP एज पर द प्रोविजंस इन द LLP एग्रीमेंट. और अभी लेट अस सी द डेफिनेशन. द LLP एक्ट 2008 defines the term partner under partner under section 2Q, under section 2Q as, क्या है पार्टनर? मीन्स पार्टनर इन रिलेशन टू अ limited liability partnership, limited liability partnership as any person who becomes a partner in the LLP, in the limited liability partnership in accordance with the limited liability partnership agreement. LLP in accordance with the
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से जो पार्टनर बनता है दैट इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी, स्पेलिंग आई विल limited liability partnership agreement, 1 minute, limited liability partnership agreement। सो नाउ हम लोग देख सकते हैं दैट who can be a partner, who can be a partner. See, the theory also is very important because when we are having a MCQ और ये chapter में what all type you will be having, I will be explaining you the format of balance sheet and P&L account of लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज सिमिलर टू कंपनी। तो हम अभी तक जैसे कर रहे थे ऑलमोस्ट आपको वो सिमिलर लगेगा, उसके सब कुछ सम्स करेंगे एंड देन वी हैव कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी इनटू LLP। तो हम लोग वो देखेंगे कि वो कन्वर्जन क्या, कन्वर्जन में जो सेम हमने अमालगमेशन जैसे करते थे ना लास्ट ईयर इन SY BCom, सेम वैसे ही हमें प्रॉब्लम्स है। तो ये दोनों हमारे लिए ये चैप्टर इज वेरी इजी बिकॉज इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस चैप्टर्स व्हाट वी हैव डन। सो हु कैन बी अ पार्टनर बोलते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया दैट मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए, मिनिमम पार्टनर्स कितना है, मिनिमम पार्टनर कितना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2%। मिनिमम पार्टनर से 2% एंड दैट में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। मैंने ऑलरेडी बोला पार्टनर्स आर पर्सन्स एंड दैट पर्सन मतलब वी आर रेफरिंग टू बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल और आर्टिफिशियल। सो हम दोनों हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, दोनों इट में बी अ पर्सन, दोनों इट में बी आर्टिफिशियल पर्सन। सो पर्सन और इट में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। मिनिमम पार्टनर्स कितना चाहिए, 2% रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ LLP। और अगर इट इज अ कंपनी, इन केस एनी बॉडी कॉर्पोरेट is a partner, then it will be required to nominate any person। अब यहाँ पे पर्सन मतलब कौन है, इट इज नेचुरल पर्सन। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है पार्टनर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू नॉमिनेट एनी पर्सन दैट इज नेचुरल पर्सन एज इट्स nominee for the purpose of LLP, for the purpose of limited liability partnership। So now following can become a partner in the LLP। कौन हो सकता है, इट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटेड इन एंड आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या है यहाँ पे कि
कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हो या बाहर हुआ होगा, दे आर अलाउड टू बिकम अ पार्टनर इन LLP, means they are eligible to become partner in LLP. Then LLP which is incorporated in and outside India, means even another LLP which is registered, which is formed in India or outside India can also become the partner in LLP. हमने देखा कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ हो या बाहर हुआ हो, they can become the partner in LLP, and other LLP which is formed in India or in other outside India can also become a partner. And then individuals resident in and outside India. So those who are residents of India or are residents of outside India can become the partner in LLP. मतलब who can become the partner in LLP, ये हमने इधर देखा that who can become, it can be company, it can in India, incorporated in India or outside India. LLP incorporated in and outside India. Individual residents in and outside India can become the partners in LLP. Next one, role of partner. If you want to ask anything, you can put in the chat box. Role of partner. What is the role of partner here in LLP? पार्टनर तो बन सकते, what are their roles? तो उनका रोल सेक्शन 26 ने डिफाइन किया है. Role of partner according to section 26, the role of partner states that every partner of the LLP is for the purpose of the business of the limited liability partnership, the agent of the limited liability partnership, but not of other partners. मतलब उनका रिश्ता कंपनी के साथ है, बाकी पार्टनर्स के साथ नहीं. As per section 26, the role of partner, kya it states about the role of partner, that every partner of the LLP is for the purpose of the business of LLP, the agent of the LLP, but not of other partners. मतलब बिजनेस में यहाँ पे what is the role of the partners as an agent to the business but not to the other partners. It means that the relation of principal and agent is only between the LLP and its partner and not between the partners. मतलब ये जो रिश्ता है पार्टनरशिप का, it is between the LLP business and the partners but not within the partners. पार्टनर्स के बीच में ऐसा कुछ there is, because see every partner has a limited liability and they are working together, they are working directly with the business, unlike company में भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स है जो खुद को आपस में they आपस में don't have any relation. Same in the, but there they don't work together. यहाँ पे they will be working together in the business. तो वो situation में they are not liable to in each other, individual partners. They are only working. उनका relation कैसे है? Business and उनका principal and agent relationship between the business
LLP and the partners. LLP and partners के बीच में LLP is the principal, partners are the agent, and between the partners इनका कोई भी relation नहीं है. Then what do we talk about the rights of partners? Rights of partners. Now, rights of partners. What rights do the partners have? So, partners have the right to participate in the management of the LLP, though they are not entitled to any remuneration. मतलब इनको क्या है, ये लोग कंपनी को के मैनेजमेंट में दे कैन पार्टिसिपेट, बट दे डू नॉट हैव एनी रेमुनरेशन अनलेस, मतलब फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द LLP इनको कोई रेमुनरेशन नहीं है, अनलेस एग्रीमेंट में दिया हुआ है दैट दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर अ रेमुनरेशन. अगर एग्रीमेंट में पार्टनर्स फॉर्म होते वक्त जो एग्रीमेंट प्रिपेयर हुआ है, अगर उसमें रेमुनरेशन के बारे में कुछ लिखा है, then only they will be entitled to a remuneration, otherwise they will not get any remuneration. And see, they can anytime they can transfer either whole or the part of their rights to the, मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं, they can anytime leave the partnership as per the agreement rules, as per the provisions in the agreement. Then next one is duties of partners. What will be the duties of the partners? That partners का rights तो देख लिया. Now what duties are there? Partners are required to comply with all the provisions of LLP Act and the LLP agreement, and do not indulge in any fraudulent transactions with the creditors or outsiders. बोलते हैं कि इनका क्या ड्यूटी है, दैट दे फॉलो दे वर्क एज पर द एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट का प्रोविजंस है वो पूरा फॉलो करे, एंड कोई भी फ्रॉड ना करे क्रेडिटर्स या आउटसाइडर्स के साथ मिलके. And in case there is any change in the name and address of the partner, he shall inform the same to LLP with 15 days of such, within 15 days of such change. इनका address या name कुछ भी change in name and address of the partner, he shall have to inform the LLP within 15 days of such change. And if there is a admission of a partner, the incoming partner shall give his prior consent to act as a partner. If any partner desires to resign from the partnership, he shall inform the same by giving a 30 days notice to other partners. Next, abhi two points I will explain, and then we will end today's lecture. Next, as I have told you, that the liability of the partners will be limited. The liability of the partners will be limited the liability of the partners. So the liability of partners in LLP, unlike partnership, is limited to the extent of their contribution. But in partnership, the liability is unlimited, but here the liability is limited to the extent of their contribution. Any partner of the LLP would not be
not be liable for the wrongful act or omission of any other partner of the limited liability partnership. मतलब आप सिर्फ आपके एक्ट्स के लिए जिम्मेदार हो, दूसरे पार्टनर ने अगर कोई गलती किया या कोई फ्रॉड किया तो उसके लिए यू आर नॉट लाइबल, यू आर लाइबल ओनली टू द extent of your contribution. And then last one, what we will discuss today will be admission and cessation of partner. So पार्टनर जो है, अ न्यू पार्टनर, वो लोग कभी भी कैन ज्वाइन द LLP और एन एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन चीज टू बी द पार्टनर ऑफ द LLP सब्जेक्ट टू द compliance of the terms and conditions of the LLP agreement. मतलब as per the rules, terms and provisions of the LLP agreement, any new partner can join the LLP business and any existing partner can leave, resign from the partnership of the LLP business. मतलब दोनों कर सकते हैं कभी भी, as per the provisions of the LLP agreement, join the partnership or leave the partnership, leave the business. Everything is allowed. So these are the points what we have discussed today. Now the remaining part we will discuss in the next lecture. Thank you very much everyone.